Assalamu alaikum and good afternoon. We are back with the chase of Terra E Casa Cricket Club. They need 164 to win this match and to lift to the title for the first time. This is Valley Cup Panzipora and we are back with the chase. Nazir, before I welcome you in the comment box, the news from the Sun is that the very vital toss won by Sport and Strikers captain, and he decided to bat first. They finished their campaign on 163 and that means they given Terra E Casa 164 to chase down and to lift to the title for the first time. And they need 164 with 10 wickets in hand from Deralati 20 overs. It's time for Nazir to carry on, but in the meantime clouds are on the sky and gentle drizzle and slight drizzle is on its way. In the meantime, the very first ball is around the corner. I would definitely love to hand over my microphone to my colleague Nazir in the comment box. Nazir. जेके स्पोर्ट्स टाइम की दुनिया के सभी व्यूअर्स का दूसरी पारी में हार्दिक अभिवादन, स्वागत। और आपको याद होगा 163 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवर में स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागम की टीम ने 164 रनों का विजयी लक्ष्य और उसका पीछा करने उतरी टेरा ई कासा की टीम। इस समय प्रारंभिक जोड़ी बीच मैदान में पहुंच चुकी है। क्या रणनीति होगी, क्या योजना होगी और किस प्रकार से इस लक्ष्य का पीछा करेंगे इस बड़े फाइनल मुकाबले में, ये देखने वाली बात होगी। शुरुआत हो चली है बिलाल और मुतहर की जोड़ी बीच मैदान में और मुख्तार जो कि गेंदबाजी प्रारंभ करेंगे। दूसरी पारी पहली गेंद और इस बार जोरदार अपील, पहले ही गेंद से एक दबाव बनाने की स्थिति, लेकिन नकारा अंपायर ने, उस पर कोई प्रभाव नहीं। स्कोर अभी दूसरी पारी का खाता नहीं खुला है और आपको याद होगा 164 मनवर जिस प्रकार से 164 रन बड़े मुकाबले में बनाने हैं, दबाव की स्थिति है बड़े मुकाबले की, तो किस प्रकार से क्या रणनीति और क्या योजना रहेगी प्रारंभिक जोड़ी की। Well, the two openers, they have to make sure that they play the ball on merit and they just wait for the bad balls, and bad balls are easy to dispatch to the boundaries. At this crucial juncture they need to keep wickets intact, and that's what they need at this instant. Oh, that's in the air. We'll have to wait and watch. It can be wicket number 1, and it is indeed. Wicket number 1 goes down and Bilal has to walk back. And Spartan Strikers tracking the very first over on ball number 2. And look at that. Tariq Makri is on his toes there in the dugout, and they're all celebrating. They all went up in celebration, in jubilation. There goes wicket number 1 in over number 1 and ball number 2 is in the back of Bilal Lafti, and he has to walk back, and on that occasion he wants to clip that one ball ballooning up in the air and down to the throat of short mid wicket fielder. He does well. He covered almost 10 yards to get to the ball and holding on to the catch. First blooded run, it's none for 1 in over number 1. उत्साह का ठिकाना नहीं है और कहना चाहिए जिस प्रकार से घेरे में खड़ी है पूरी टीम। क्यों न हो, शुरुआती ओवर में खाता नहीं खुला है और 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 0 है स्कोर बोर्ड पे। क्या शुरुआत रही है, बहुत ही बेहतरीन, विश्वसनीय। और इसी बीच हमारे व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। मुंतजिर आबिद हुसैन, जान मोहम्मद हुसैन नामजद और आमिर कयूम भी हिलाल गनाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जुड़ जाइए इस क्रिकेट के महासंग्राम में जो कि पांजीपोरा के इस खूबसूरत मैदान में चलता हुआ मुकाबला। फाइनल 164 बनाने हैं और 0 पे पहला विकेट मात्र पहले ओवर में। Well, exactly, we're seeing the back of Bilal Lefty and Bilal Palat, somebody threw it out, and he is enamored of the plot. Also Mir Tendaus, Tajammul Ganai, Mohammad Amin, Ishumir and others at the part of Sakibani join us. The broadcast, the news from the Sunrise, Terra E Casa, Hyderabad, so thank you. And Terra E Casa required 164 to lift to the title for the first time. This is Valley Cup Panzipora and we're live with the second innings. Ibrahim Fayaz and Raman Sharma, John Muhammad and Lon Riaz and Altaf Telecom. Thank you all the beloved viewers for tuning in to the live broadcast. And Tarappe T20 Championship Tournament and Manzoor Ahmad Lon, all other beloved viewers, thank you for tuning in to the live broadcast. Sam to you, John Muhammad, and you can send us the digital token of love. Walaikum salam, Fidal Islam. You can send us the digital token of love through digital stars. Newcomer walks into the middle, Avash will face Mukhtar, and that's a good shot on driven, compact short down towards the long on region, will get a single and he goes up the mark with the very first ball. It's 1 for 1 in number 1. Still they require 163 more runs, Nazir, to win this match. A slip in place, gully in place, backward a point, short extra cover, wide Ishmedov, and long on the boundary, short mid wicket and backward Skalak. With this wheel, Mukhtar will bowl the second ball of his
Fourth ball of his very first over. We have seen the back of one of the batsmen, that is Bilal, has been sent packing. Now Mutahir and Uwais are out in the middle. The huge responsibilities laid on their shoulders. Let's wait and watch what Mutahir got for all of us in its kitty. Let's find it out. Oh, that's a good ball. Turning away, further turning away, and he very watchful. Lapped along to wicketkeeper. No harm done. It's 1 for 1 in over number 1. एक विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाजी का दायित्व मुख्तार के पास और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई और ऑन द राइज इसको खेला जरूर वहां पर मिसफील्ड का नतीजा और जहां पे रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फाइनल मुकाबला जो कि वैली कप पंजीपोरा 2022 के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन मुकाबला बीच मैदान में चलता है। डार बिलाल हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल रशीद के साथ शेख शहजाद भी, शेख शहजाद के साथ परवेज अहमद, जीशान मीर और मोहम्मद मुसद्दक भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। और जिस प्रकार से अभी तक का 2 रन बने हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर बिलाल आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं टेरा ई कासा की ओर से। और कहना चाहिए कि इस समय बीच मैदान में उवैस और मुतहर की जोड़ी काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, क्योंकि यहां से एक ठोस विश्वसनीय शुरुआत की आवश्यकता है। यदि वे का मजबूत आधारशिला अपनी टीम को दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को भेद किया जा सकता है। Exactly, it's 2 for the loss of 1. We are in over number 2 of the match. Mutahir out in the middle, alongside him Uwais, and Javed is going to bowl the over number 2 of innings. Terra E Casa require 164. They're still 162 runs behind. What could be the magical figure to touch and to lift to the title? Javed Farooq, Salman and Azhar Nabi and Mir Bashir. Thank you all the beloved viewers for tuning in to the live broadcast. You can send us the digital token of love through digital stars. We're eagerly waiting for your stars. Send in the stars. We'll include your names one by one, and each one will be included in the live broadcast. Thank you Bashar Nabi and Mir Bashir. It's 2 for the loss of 1. We've seen the back of Bilal Palad, and it is turn for Mutahir to come to the party, and that's away down the leg side. Wide ball it is. It's 3 for 1 after 1 over. दूसरा ओवर इसमें प्रगति पर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि जावेद है गेंदबाज और काफी कुछ निर्भर करेगा इस गेंदबाज पे कि एक सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। दिशा और लाइन में अपना नियंत्रण रखना होगा वहां पर गेंदबाज को और यहां से एक प्रभावशाली गेंदबाजी करनी होगी। इस ओवर में अगली बार ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद, हालांकि लेग स्टंप पर मोड़ने की कोशिश विकेट कीपर ने फील्ड किया लेकिन रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया। जहांगीर अहमद, तारिक अहमद, सनम सजाद और अजहर नबी भी हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद लेते। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग इस कांटे की टक्कर के मुकाबले का आनंद ले सके। 3-1 विकेट के नुकसान पर जावेद हैं गेंदबाज। उवैस और मुतहर की जोड़ी बीच मैदान में टेरा ई कासा की ओर से 164 बनाना है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में अगली बार राइट ऑफ ओवर द विकेट और इस बार ऑफ स्टंप पे आती हुई गेंद को खेला लेकिन रन बनने की किसी भी संभावना को खत्म किया। अच्छी रणनीति यहां पर, हालांकि शुरुआती ओवर में दोनों बल्लेबाज चाहते हैं कि यहां से कोई विकेट ना खोया जाए। एक साझेदारी की आवश्यकता है। यदि एक 30-40 रनों की साझेदारी यहां से पनपती है तो आने वाले समय में आसान रहेगा जो छोटे के बल्लेबाज हो। Well, exactly, if you lay the strong foundation, and the way we saw in inning number 1, the top order batters, they laid the strong foundation for the big score. In the end, they managed to get to 163 at least, and that's a gentle punch of the back foot, just pushed off the back foot for no run, but that would definitely boost the morale, and he was able to quite middle to that one. Only as far as Sillier cover is concerned, no run is 3 for the loss of 1 after 1.3 balls. Advocate Hilal, thank you for your love and support, and thank you once again. We're really indebted to your love. And Yasin Bashir, Batanveer and Saqib War, thank you once again. It's 3 for the loss of 1. We are in over number 2. Bashar Nabi and Advocate Hilal, thank you. Oh, that is a beauty. That is a wonderful. That is a peach, Nazir. Look at that one. Scare him up and nearly cleaner him up on the occasion, missed by a whisker, but look at that one. That was a wonderful delivery, tree to eyes. Every bowler would definitely love to witness that sort of a sight, and everyone would definitely love to witness that and would definitely love to watch that. It's a kind of treat to eyes of every bowler.
बहुत ही बेहतरीन गेंद, बैट और पैड के बीच में से इस गेंद को निकाला, खूबसूरत गेंद और पूरी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज को। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार फिर हालांकि एक हल्की सी अपील उत्साह, लेकिन विश्वास में कम कहना चाहिए। क्या शानदार गेंदबाजी, और जिस प्रकार से ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास आकर रखा है, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, शानदार और विश्वसनीय प्रदर्शन गेंदबाजी का। Well, exactly. That was a terrific ball. It's 3 for the loss of 1. We are in over number 2. Last ball coming up. Thank you, Mir Shabir, Saqib War and Saqib War and Ajit Kumar. Thank you, all the beloved. 3 for the loss of 1. We are in over number 2. Last ball coming up. Javed continues to bowl. He has conceded a single and Mutahir on strike. Short one. And that is a good shot. And will he be able to cut it up? Does well. Nicely fielded. Oh, chance of a run out. Well directed, would have been gone by a few yards to be precise. But luckily he made the ground with ease. 2 more runs added to the tally. 5 for the loss of 1. 2 done. It's 5 for 1. They're chasing 164. They are 159 runs behind from their remaining 108 balls. And they got Bashat Nabi, thank you, Saqib War and Maghrib Mudassir and Bad B, thank you, Arshad Bhatt and others. Well, this broadcast is brought to you by Aqua Fenestration, Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Pumper, Real Estate Pumper, Amateur Multi-Fashion, a branded store, Agriclan Magam. It's 5 for the loss of 1. Nazir, 2 overs done, 5 for the loss of 1. 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर शांत धीमा क्रिकेट, लेकिन इन परिस्थितियों में बल्लेबाज बखूबे जानते हैं कि किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करनी है। काफी कुछ निर्भर करेगा, दायित्व है उनके कंधों में, और ऐसे में अपने कप्तान के विश्वास पे खरा उतरना होगा। अच्छी गेंद, अंतिम समय में उसको खेला जरूर, लेकिन सीधे वहां पर खिलाड़ी के पास बगैर किसी रन के। 5-6 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर, और गेंदबाजी का दायित्व मुख्तार के पास। वर्तमान रन गति 2.31 प्रति ओवर के हिसाब से अब तक रन बनाए हैं, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 8.92। मुख्तार है गेंदबाज इस ओवर में। अगली बार अच्छी गेंद, इस बार अंतिम समय में गेंद को देखा और छोड़ा विकेट कीपर के लिए, और उत्साह चारों ओर। क्रिकेट के समर्थक और दर्शक लगातार इस मुकाबले का आनंद लेते हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये सीधा प्रसारण पंजीपोरा के इस मैदान से आप तक पहुंचता हुआ, और लगातार बने रहिए हमारे साथ। एक खूबसूरत और कांटे की टक्कर का मुकाबला इस समय बीच मैदान में चलता है। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, वहां पर विकेट कीपर भी चुके, हालांकि रन पूरा कर रहे हैं, और लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और स्कोर 6-1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में टेरा ई कासा, जिन्हें कि इस मुकाबले को जीतने के लिए, खिताबी जीत के लिए 164 रन बनाने हैं, और अभी भी 105 गेंदों से 158 रनों की आवश्यकता। रफीक का मंकू हमारे साथ बने हुए हैं, बाबू आदिल के साथ सईद राजी भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए मासूम बुखारी के साथ। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, लेकिन सम्मानजनक रूप से खेला जरूर बगैर किसी रन के। अच्छी रणनीति और शुरुआत है, हालांकि ये मात्र तीसरा ओवर प्रगति पर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मुतहर और ओवैस की जोड़ी बीच मैदान में, और एक संघर्षपूर्ण मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। इस ओवर में अगली बार फिर खेला, हालांकि उस ओवर खिलाड़ी, लेकिन जब तक उसको फीड किया जाता तब तक का पर्याप्त समय था 1 रन लेने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7। रफीक के साथ बाबू आदिल और सईद रिजवी भी मासूम बुखारी के साथ लगातार बने हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। आइए जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए इस फाइनल मुकाबले का। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ, क्योंकि आकर्षक और खूबसूरत मुकाबला इस समय बीच मैदान में। 200 और दूसरी पारी, क्षमा कीजिएगा, 164 बनाने हैं दूसरी पारी में। टेरा ई कासा को बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन क्या शानदार क्षेत्र रक्षा, वहां पर जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम। अंतरराष्ट्रीय सर की याद दिलाते हुए, और इस प्रकार की आवश्यकता है क्योंकि आप 164 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्षेत्र रक्षा द्वारा हर संभव कोशिश करनी होगी, हर संभव प्रयास करना होगा, ताकि स्कोर को जो है दूसरी बल्लेबाजी को इससे रोका जा सके। Well, you can see that acrobatism at its peak, I should say, and look at these two fielders. It remind me of great Mohammad Kaif and Yuvraj Singh. They're backward a point, and they use it to work like a white wool, and I like that of concrete wall. Thank you, Azhar Sultan, but thank you for your love and sport. Thank you once again, and that was a wonderful square cut of the backward. But look at the fielding position. They're backward a point. I told you earlier on that remind me of great Yuvraj and Mohammad Kaif. They're backward a point, putting in the full length dive and flying like a big ants, and even they remind me of great John T. Rhodes.
बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और अंतर्राष्ट्रीय सर को कौन बुला सकता है, इसकी चर्चा आप जारी रखेंगे इस ओवर में। अगली बार अच्छी गेंद, हालांकि जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश, पीछे खिलाड़ी है उनसे गेंद छुटकी, गेंद जा रही है सीमा रेखा की और संभवतः जब तक उसको फील्ड किया जाता लगभग सीमा रेखा के 1-2 कदम अंदर, तब तक का रन बनते हुए खाते में और जोड़ते हुए और कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर टेरा ई कासा 164 का पीछा कर रही है। बहुत ही बेहतरीन और विश्वसनीय प्रदर्शन पारी का चौथा ओवर प्रगति पर, और चारों ओर जहां भी नजर दौड़ाई जाए विकेट के चारों ओर खूबसूरत और क्रिकेट के समर्थक और दीवाने इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। इस ओवर में अगली बार सामने वाले छोर से इस बार कदमों का इस्तेमाल, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा की और देखना है रोक पाते अथवा जी हां, जब तक उसको फील्ड किया जाता तब तक दूसरा रन भी पूरा कर लिया, 2 रन और अच्छी रणनीति स्कोरबोर्ड को लगातार गतिशील रखते हुए और कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति को दूर हटाते हुए अपने आप से दोनों बल्लेबाज। Exactly, thank you Zurulai and Munir Hanger. That was a good shot, lifted up down towards the long on, and now the fielder drops down to the attacking field by captain, and that's great presence of mind at this crucial juncture. 12 for the loss of 1. Awais on strike. Here comes Javed, goes to Awais and gently done, but straight to gully fielder. 1 be any run. It's 12 for the loss of 1. We are in over number 4 of the match. Cloud cover is getting heavy on the sky, but at the moment it's beautiful environment around the park for cricketing. It's 12 for the loss of 1 after 3.3 balls. It's halfway down in the over number 4. They still require 152 more runs from remaining 99 balls with 9 wickets in hand to lift to the tail. Ovais once again on strike. We'll be waiting for Javed. Javed has conceded 7 so far. In comes Javed and goes to Ovais, and Ovais punches that one, but straight extra cover field. Mondani run, another dot ball, and every dot ball is worth and weight in a gold here. It's 12 for the loss of 1 after 3.4 balls, and Terra E Casa, they're unable to break free. Both the batters are trying their level best to get things going, but they're unable to make sure that they set the tone for the good chase. Thank you Mudassir Shoaib, Pir Nisar, Mubarak Ahmad and others, Abdul Wahab and Saeed Razi. Oh, that's a good ball coming into the bats, nearly getting him on that occasion, but luckily the ball just deviated from its original path and it goes straight to the wicket keeper. It's 12 for the loss of 1 after 3.5 balls. Last ball coming up, and on strike is Ovais. He's on to 6 of 12 balls, and Mutair is on to 4 of 10 balls. They use too many balls and they need to make sure that they got their eyes in. Now they have to capitalize. Iqbal Khan, Javed Qadir and Mudassir Soba and others, thank you for tuning in to the live broadcast. 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद को खेला जरूर, हालांकि वहां पर खिलाड़ी है तैनात, थ्रो किया लेकिन तब तक सुरक्षित क्रीज पे पहुंच चुके थे। अच्छी दौड़ विकेट के बीच में, और जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम में 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर है टेरा ई कासा का। ओवेस और मुतहर की जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई। Well, pretty much disciplined bowling from Spartan strikers. 12 for the loss of 1. And thank you, somebody writes in, Azhar Sultan Bhatt, he's talking about, and we can't do that, and you can talk to our Una, and he can convey the message about that. But thank you all, Tafani and others, for tuning into the live broadcast. And this is your love which keeps we people motivated that we're doing at least a good job to serve the valley in our way. It's 13 for the loss of 1. Yasin Lon, Pare Akib, Sheikh and Javed Qadir and others, thank you for tuning into the live broadcast. This broadcast is brought to you by JK Sports Time in collaboration with Arco Fenestration, manufacturer UPVC doors and windows, and the Sports India, Shining Star Pampur, Real Estate Pampur, Fashion Fiesta and Shining Star Pampur. And in the meantime, that's a good shot, but straight to fielder there at long on area, wideish long on, almost at wideish mid on area. We'll get a single. Score moves to 14 for the loss of 1 after 4.1 ball. It means disciplined bowling, and they're really been on top, and they're not giving an inch away, and they're keeping things tight. Thank you Parayakib, Sheikh Ayan and others. इस बार अगली गेंद को खेला जरूर, हालांकि वहां पे खिलाड़ी है तैनात। अच्छी रणनीति, लगातार स्कोरबोर्ड को गतिशील रखते हुए दोनों बल्लेबाज, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में ओवेस और मुतहर की जोड़ी बीच मैदान में। और जिस प्रकार से आज गेंदबाजी हो रही है दोनों छोर से, अगर हम गेंदबाजी की बात करें, बहुत ही बेहतरीन नापितुली कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है स्पार्टन स्ट्राइकर्स की ओर से। अगली गेंद को खेला, हालांकि गेंद हवा में रहने के बाद नो बैट्समैन में गिरती हुई 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया, वापस
वापस भेजा नॉन स्ट्राइकिंग छोर से वहां पर बल्लेबाज को 1 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 15, 1 विकेट के 16, 1 विकेट के नुकसान पर 4.3 के बाद सोफी शाबिन बट मुदस्सिर के साथ फहीम बट भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से अपना प्यार और विचार देने के लिए। इस बार अगली गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, हालांकि वहां पे स्टंप्स बिखेर दिए हैं, लेकिन सुरक्षित क्रीज पे उनका पिछला पांव और यहां से कोई क्षति नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 16, 5वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर टेरा ई कासा, जिन्हें कि इस मुकाबले को जीतने के लिए 164 रन बनाने हैं और बीच मैदान में इस समय मुतहर और ओवैस की जोड़ी बनी हुई। Well, it's 16 for the loss of 1 after 4.4 balls. Thank you, Azhar Sultan. Thank you, Mir Fayaz and Yasin Lone. And Need 360 camera. We have really arranged that. Dear beloved viewer, don't worry. And you will get that sort of a view in Sher-e Kashmir Cricket Stadium. And that's a good ball. And on that occasion, beaten all ends up. He played cross the line. And there is no need to play cross the line shots, Nazir. You have to be circumspect. Just wait for the bad ball. And bad ball is going to come. You just to be patient it out there in the middle. This is the game of patience. Hold your nerve and just wait for the bad balls and then try to dispatch that to the boundary. Next ball from Mukhtar. Oh, that's a good ball. Nearly got him on the occasion, ballooning up in the air, but he dropped short of the gully, but could have been a regulation catch. In the end, gets away with it. Mir Hanif, Yasin Bashir and Shamim Wani, GM Shah and others. Thank you. 16 for the loss of 1 after 5 overs. Can you believe? 5 overs done. Just 16 on the board at the cost of 1. That means Terra E Casa are in desperate need of runs, but look at spot and strikers, the discipline they have shown so far. Credit must be given to their side. And Karamat Hussain, Lon Javed, Mir Hanif, Yasin Bashir, thank you. And you must be thanking our blood sponsors, Arco Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, Anthem Sports India, Fashion Feast, the Shining Star Pampur, Real Estate Pampur, and MHM Multi-Fashion Branded Store, Magam Agricolan. In the meantime, Terra E Casa scoring at the rate of 3.20. Required rate is 9.87. It's still climbing, and if it manages to go past 10, it won't be easy for Terra E Casa to chase down this mighty total. At the moment, it seems to be an uphill task for their side, but the only thing that can save their batting lineup, they have to make sure that from here on they launch the counter-attack. 16, 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट पर कदमों का इस्तेमाल खेल दिया उसको और सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जी हां, अंपायर का इशारा आता हुआ और जैसे ही शायद हमारी बात सुन ली हो, इस छक्के के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 22 से 1 विकेट के नुकसान पर। इस प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से कहना चाहिए कि गेंदबाजी हावी रही थी, शिकंजा कसा हुआ था, लेकिन इस बार इस स्ट्रोक के साथ कहीं ना कहीं आत्मविश्वास लौटा होगा बल्लेबाज का। Well, they need more than that. They need such kind of shots coming down the track, lifted that one up, and that just disappears on that portion of Skylark for 6. And they need such kind of shots. Timely they need those hits, and that can really set the tone for the good chase, and they can really feel free from here on. But they need more than that. But let's wait and watch what Javed has got for all of us in its kitty, and let's wait and watch how he's going to bounce back and how he's going to operate on this very delivery. It's 22 for 1. Next ball. Oh, that's a good ball, driven handsomely, but straight to fielder there at mid-on area will get a single. Score moves to 23 for the loss of 1. 23, 1 विकेट के नुकसान पर 6ठे ओवर में ओवैस और मुतहर की जोड़ी। हालांकि ओवैस 16 पे नाबाद 16 गेंदों का सामना किया। इसी बीच यासर बीर के साथ रूफुल मकबूल भी हमारे साथ बने हुए क्रूज भाव्या के साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए इस खूबसूरत आकर्षक और कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले का, जो कि इसमें पांजीपोरा के खूबसूरत मैदान में वैली कप वर्ष 2022 का फाइनल मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागम बनाम टेरा ई कासा, जो कि 164 रनों का पीछा कर रहे हैं और अब तक 6ठे ओवर में मात्र 23 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पे। जावेद इस ओवर में अगली बार उनकी ये गेंद पर फिर कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन उस ओर खिलाड़ी है, देखना है रोक पाते अथवा नहीं। जी हां, जब तक उसको फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, तब तक वहां पर दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था रन लेने का और इन रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 26, 6ठे ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन और क्रिकेट के समर्थक, दीवाने और प्रेमी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए जहां नजर दौड़ाई जाए वहां खचाखच ये मैदान भरा हुआ दर्शकों से और क्रिकेट का आनंद लेते हुए इस फाइनल मुकाबले में पंजीपोरा के खूबसूरत मैदान से। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सभी व्यूअर से निवेदन होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुड़कर इस खूबसूरत और कांटे की टक्कर के मुकाबले का आनंद ले सके। और बहुत बहुत आभारी होंगे पूरी कमेंट्री टीम द्वारा जिस प्रकार से अपना सहायता और सहयोग हमें प्राप्त करते हुए। फिलहाल
मोहम्मद अनीस हमारे साथ बने हुए हैं यासन मीर के साथ, और वर्तमान स्थिति में 25 से 1 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर में इस बार फिर ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को खेला, लेकिन सीधे वहां पर खिलाड़ी को भेद नहीं पाए, रनों की गति पे विराम लगता हुआ और स्कोर टिका हुआ 25 से 1 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर में। 5.4 balls done, it's 25, quarter 50 on the board, and Yasin Mir, thank you, Dilbar Bashir and others, thank you for tuning in to the live broadcast. 139 more runs needed of 86 bowlers. Yeah, exactly, we did try our level best to Karamat Hussain and others, thank you. In the meantime, we'll have to wait and watch. Javed continues to bowl. He has conceded 17 so far, Nazir, but Mutair is on to 7, I think so, and Uwais is on to 16 of 16 balls. Well, look at this man, Uwais. He has done really well. He has done well. He's playing runner ball, and Mutair, he has to just change his gears. He is on to 8 of 17 balls, and this is where they need to work on the basics. 26 for the loss of 1. Last ball coming up. Mandatory power play is on. Last ball of the 6th over, and with that we shall come to an end to this power play, and we'll have to wait and watch. We'll have to wait. Javed will be bowling. Last ball of the mandatory power play is coming up from Javed. Javed comes on to bowl, crosses umpire, and those. Oh, shot one outside the off stump. He wanted to cut that one, but the ball hurries on to him into the safe hands of wicketkeeper No Hamdan, War Maqsood, Mir Hanif, and Branded Baba and Mohammad Abbas. War Maqsood, thank you for tuning in. 6 done, 26 for the loss of 1. 6 ओवर पूरे हो चुके हैं, यानी कि पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 26 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि विकेट एक ही गंवाया है टेरा ई कासा ने, लेकिन यहां से किस प्रकार से शुरुआत देंगे, किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, एक साझेदारी की आवश्यकता होगी। यदि इसमें सक्षम हो पाते हैं तो इस रन चेज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर एक नियमित नपीतुली कसी भी गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाजों को। वार मकसूद और खान फेरोज भी हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम को अपना प्यार और विचार देने के लिए। Those beloved viewers who are getting uninterested in this very live broadcast, the news from the centre is that they got Adil border to come, and Bahubali is a Terra. You can understand from the name, it makes the quite difference, and at the moment it is 26 for the loss of 1, and it seems to be Spartan strikers, they're right on top of the match, but you can't take the match away, you can't take the credit away from Bahubali and other guys like Dr. Sajjad and others to come, and they can really reap the harvest, and they can send the balls out of the park, and they can take the bowlers to the cleaners. Anything can happen. This is the game of glorious uncertainty. We saw in the very inning number 1, in the very first part of the innings, and we saw that Magam strikers, they were looking to post up 200, but all of a sudden their confidence were dented, and they just managed to finish their campaign at 163. Is it a no ball? And yes, it is a no ball. That's going to be a freight coming up. It's 27 for the loss of 1. The pressure begins with the no ball. Freight coming up. Let's wait and watch what Mutair has got for all of us in its kitty, for entire fan base of Nazimir. Thank you for your love, for the entire base of JK Sports Time. 27 पे 1 और इस ओवर में अगली बार, इस बार अच्छी गेंद, हालांकि लेग स्टंप पर मोड़ना चाहते थे। 1 रन तो पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, जरूर 1 रन पूरा किया, हालांकि विकेट कीपर खुद जब तक उसको फील्ड करते हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 से 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स से ये निवेदन होगा कि कहीं जाइएगा नहीं। खूबसूरत मुकाबला इस समय बीच मैदान में, हालांकि दोनों बल्लेबाज ओवेस और मुतहर की जोड़ी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हाल फिलहाल के रिकॉर्ड को देखें तो शानदार गजब का फॉर्म रहा है। और ऐसे में अभी आदिल बॉर्डर का आना बाकी, उसके बाद बाहुबली का आना बाकी, तो कहीं जाइएगा नहीं। खूबसूरत सितारों से सजा हुआ ये साइड और आकर्षक मुकाबला, और वहां पर गेंद सीधे हाथ में, बाहरी किनारा लेने के बाद दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 28 पे 2। Well done, it's wicket number 2. The second blood is drawn, and Basit Bashir among the wickets. And look at that, first slip really, he does well. He jumped quite a bit and holding on to the ball. Reverse cupping, not easy, but he has taken that blinder of a catch. And there goes wicket number 2 at the score of 28. Terra E Casa in all sorts of problem and trouble. They are in tatters, they are in shallow waters. They need a man out in the middle, like Adil Bordra Bahubali, to take them out of this danger. At the moment, they are in tatters, and Tarek Maknu's side, they are really on top of the match. Thank you all the beloved viewers, Saqib Aqib and Shah Aqib, But Imtiaz, Sajjad Ganai and Musab Ibn Bilal. Thank you for tuning into the live broadcast. One thing is lacking from our viewers' perspective. They are not sending the digital token and coupon of love to JK Sports Time. We love to throw it out time and again. We are really indebted to your love and support. It's your love which keeps we people motivated time and again to provide you with a live dose of commentary time and again. And we need your support through digital token of love. It will be digital stars. Keep sending in. We will
We will include your each and every name in the live broadcast. At the moment, Terra E Casa 28 for the loss of 2. Nazir, still they need 136 runs. From here on, we can still say that it's anyone's game. Anyone can bounce back and can announce himself. They can run away with the scorecard. But at the moment, it seems to be Spartan strikers. They're reaping the harvest. हमें आपके बात से 100% सहमत। 28 पे 2, 6.2 के बाद हालांकि इस समय निर्णायक मुकाबला बीच मैदान में। अगर बात करें, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है टेरा ई कासा के लिए, क्योंकि 164 रन बनाने हैं और मात्र 6.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 28 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। आदिल बॉर्डर क्रीज पर पहुंचे हैं, तो कहना चाहिए एक बेहतरीन और विश्वसनीय बल्लेबाज। ऐसे समय में उनका पदार्पण हुआ है जबकि टीम को आवश्यकता है एक बड़ी पारी की, और कौन बुला सकता है उनकी हाल फिलहाल की पारियों को। बहुत ही बेहतरीन विश्वसनीय प्रदर्शन। क्रूज बाबिया और जेके स्पोर्ट्स टाइम को अपना प्यार और विचार देने के लिए मासूम बुखारी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और विचार देने के लिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देते रहिए। आवश्यकता है आपके प्यार और विचार की हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। मीर हमीद का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम की पूरी कमेंट्री टीम द्वारा। 28 पे 2, 6.2 के बाद आदिल बॉर्डर नए बल्लेबाज आए हैं। ये गेंद तो इस बार ऑफ स्टंप पर खेला जरूर। 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए संभवतः जाना चाहेंगे। जी हां, और जब तक फील्ड होकर के आती दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और खाते में जुड़ते 30, 2 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर में मीर हनीफ भी सजाद गनाई के साथ बने हुए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का जो इस समय जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हुए और इस खूबसूरत आकर्षक फाइनल मुकाबले का आनंद लेते हुए। Border goes up the mark with that pace. 30 for the loss of 2. Next ball coming up from Basit Bashir to Border, and Border punched that one but finds the fill in place. No run. Score remains 30 for the loss of 2. But this man is really possessing some talent, and he can really knock the ball in the pockets on either side of the track, and he can rotate the scorecard. And this man is going to be key for the chase. If he manages to hang around the crease for next 5 or 6 hours, that means Terra E Casa can give themselves a chance to be back in the match. Oh, that's a good shot. Will this beat the fielder? It looks like, but the fielder is getting around the ball. Oh, sloppy field. It goes through his field stance down to the boundary. For a while I thought it will be cut off, but it goes into the boundary, and Border, it was deserving a boundary. That shot deserved a boundary. It got that in the end. 34 for the loss of 2, and Border goes to 6 of 3 balls, and he's got a terrific strike rate of 200, and he's timing the ball to perfection. 34 for the loss of 2. 34, 2 विकेट के नुकसान पर 6.5 के बाद। और जैसे ही आदिल बॉर्डर का आमंत्रण हुआ है, दर्शकों में शोर उत्साह की लहर दौड़ी हुई। क्यों ना हो, क्योंकि बड़े बल्लेबाज का आमंत्रण हुआ इस बार। अगली गेंद को बैकफुट पर जाकर के खेलने की कोशिश, हालांकि सफल भी हुए। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 35। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर आदिल बॉर्डर और मोतहर की जोड़ी बीच मैदान में। मोतहर 9 रन बनाकर इस समय नाबाद है और 19 गेंदों का सामना किया है। ये इस बात को दर्शाता है कि किस सहजता के साथ और संयम के साथ भी बल्लेबाजी करते हुए। Well, exactly. Basit Bashir has to be circumspect. He has bowled too many no balls, and that's a wonderful shot. But we'll find the fielder there at wideish mid-on area. Just a single, and score moves to 37 for the loss of 2. Nazir, since the arrival of Adil Border, they started rotating the strike, and this is the beauty of the big man. And check his bowling wrist. He shouldn't be allowed to bowl. And the Valer Fonteli sent him to Chennai, where he will be checked by BCCI established at Santa. And he will be tested whether he's bowling, he's exceeding the limit of 15 degrees, and whether he's bowling 90 degree and something else. You can go there and find it out. Thank you. Fahim Butt and Sheikh Altaf and Lone Musab and others. Thank you. It's 37 for the loss of 2. Bahubali is yet to arrive. Dr. Sajad is yet to come. And this man, Adil Border, has made his way out into the middle. Now Adil Border and Mutahir, they need to shoulder the innings, and both have to play the anchoring role, as 2 of the batters have been sent to packing at the score of 37. That means there are 13 overs at their disposal, 78 balls. But look at, their asking rate is 9.77, and they need still 127 more runs to win this match and to lift to the title. But at the moment we can simply say that Spartan strikers Magam, they're really on top of the match, and if they manage to hold on to their nerves, and they can really win this one.
127 रन अभी भी बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए बची हुई 78 गेंदों से, और लक्ष्य धीरे धीरे से मुश्किल होता हुआ, हालांकि अभी भी इस मुकाबले को रन चेज को पार किया जा सकता है, लेकिन इसकी चर्चा ज्यादा देर बाद। ये गेंद द्वारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर और संभवतः वाइड का इशारा अंपायर द्वारा अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38, 2 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में मुतहर और आदिल बॉर्डर की जोड़ी बीच मैदान में। यहां से स्क्वायर बोर्ड को गतिशील रखना होगा, खराब गेंदों को सही नसीहत देनी होगी, अच्छी गेंदों का सम्मान रखना होगा, और उसके बाद एक बड़ी पारी खेलनी होगी दोनों छोर से दोनों बल्लेबाजों को, यदि इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं तो। रऊफ वानी, शाहनवाज और मीर जावेद भी हमारे साथ बने हुए इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। इस ओवर में अगली बार, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अपनी जगह लपेटने की कोशिश, लेकिन असफल, और गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। 38 पे 2, 7 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है 8वें ओवर में प्रगति पर, और कहना चाहिए अभी भी 125 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। टेरा ई कासा को 163 रनों का लक्ष्य मिला है स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागाम द्वारा इस फाइनल मुकाबले में। मुश्ताक इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट, बाहर अच्छी गेंद लेग स्टंप पर आती हुई, और खेला उसको जरूर, 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, लेकिन वहां पर चुस्त खिलाड़ी और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और खाते में जुड़ता। 39 पे 2, शाहिद शौकत, मार्फत मजीद, मीर जावेद हमारे साथ बने हुए। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। आदिल बॉर्डर और मुतहर की जोड़ी, हालांकि अभी भी डॉक्टर सजाद का आना बाकी है, बाहुबली का आना बाकी है, तो ऐसे में कहीं जाइएगा नहीं, जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़ जाइए और मजा लीजिए इस मुकाबले का। ये गेंद द्वारा पर करारा स्ट्रोक, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है तैनात सीधे उनके हाथ में, और निश्चित तौर पे 1 रन, और अच्छी रणनीति, लगातार स्कोरबोर्ड को गतिशील रखते हुए, और ये अच्छी रणनीति, अच्छा संकेत भी है टेरा ई कासा के लिए कि अगर आपको बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में सिंगल्स और डबल से स्ट्राइक को रोटेट रखना होगा। Well, somebody is talking about Gundasi, but thank you. It's 41 for the loss of 2. We are in over number 8 of the match. Mushtaq comes on to bowler. That's a good shot. And will this be the fielder? Mukhtar the fielder. He gets to the ball in time and sends in the return. The 2 batters fetch 1. It's 42 for the loss of 2 after 7.3 balls. Nazir, still they're in with a chance. And they have to give themselves a kind of a celebration that they are still alive in the match. 42 पे 2, 8वें ओवर में यह है अब तक का लेखा जोखा। 122 रनों की आवश्यकता 75 गेंदों से इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुश्ताक इस बार अच्छी गेंद पूरी तरह से चकमा दिया, समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज, और कहना चाहिए कि पूरी तरह से वहां पे छकाया बल्लेबाज को, और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 42, 2 विकेट के नुकसान पर। जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर्स का स्वागत करना चाहेंगे जिस प्रकार से अपना प्यार और विचार देते हुए। अजहर सुल्तान भी हमारे साथ बने हुए। 164 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। 42 पे 2, 8वें ओवर में 122 रन अभी भी बनाना है। मुश्ताक इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है तैनात, और अगर क्षेत्र रक्षण की बात की जाए तो शानदार क्षेत्र रक्षण लगा के रखा है वहां पर कप्तान की अगर बात करें स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागाम की, और जिसके चलते इसमें मात्र 8वें ओवर में 43, 2 विकेट के नुकसान पर आदिल 9 और उनका साथ दे रहे हैं मुतहर 12 पे। Mutahir is on to 12 of 23 balls. He has used too many balls, and Adil Border is on to 9 of 7 balls. And in the meantime, Mushtaq comes on to bowl the next one. Oh, that's a good shot. Tan's played. That will find Whitey Schmidt on in place. Just a single again. The story is Sam Nazir. Nothing changed. Once again, that slam, that Tan shot, but he yielded a single. देखिए एक बात और यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज आदिल बॉर्डर और मुतहर गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये अच्छे संकेत हैं, क्योंकि पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ वो बल्लेबाजी करते हुए। Exactly, and if they manage to middle the ball, that is quite some achievement, and that means the batsman has got his eyes in, and he won't be playing any wrong shot, any poor shot, and he will be trying to play the ball on merit. It's 44 for the loss of 2 after over number 8. 8 done. It's 44 for the loss of 2. We are going to be in over number 9. Let's find it out. And Saqib is watching alongside Shakoyum Mir Javed. And Mir Javed, he's another regular viewer. Time and again, he loves to tune into the live broadcast. He joins us. It doesn't matter where from we are live, he loves to join in, and he's the regular viewer. Thank you, Mir Javed, and Saki for your love and support, Qayyum Malik and others. This broadcast is brought to you by Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, followed by Anthem Sports India, Shining Star Pampur, and Real Estate Pampur, and MHM Multi-Fashion branded store. Well, sorry Nazir, and you're really swearing it out here under the sweltering conditions at the moment. But in the meantime, we'll have to wait and watch Basit Bashir to continue. Nisar Ahmad, thank you, all way down the leg side. And it's him on the type chance of a run out. Gone bagging.
But in the end, Mutair goes off strike, brings Border back on to strike. And Border wanted that strike badly, and because he knows that. And look at this very area. The asking rate is surpassed 10. It's 10.06, and that's why Border wants to be back on to strike and bring it down 10, and that can really make some sense. बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता इस समय बनी हुई है और इस बार सीधे बल्ले से कलाइयों के सारे बोला, हालांकि प्रयास वहां पर जरूर किया था लेकिन असफल बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, एक रन और चहलकदमी करते हुए 45 2 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 9वां ओवर प्रगति पर प्रभाकर ननीवाल हमारे साथ बने हुए इस मुकाबले का आनंद लेते हुए और राही लतीफ पे रफ्तार सिराज के साथ राही लतीफ Well, as a captain, need to work on the basics. This man has bowled 3 no balls. The first man had to up no balls, and he need to work on the basics. And someone need to get across and tell him, "What are you doing, man? You are bowled 3rd one. It's going to be a freight coming up." Oh, that is a Weber delivery. Oh, and this is going to be another big problem. We'll have to wait and watch. Does he manage to stop that one within the boundary? And we'll have to wait. It's a wide ball, and we'll have to wait and watch. Thank you, Saki and others, for your love. And Sam, to you, brother. Sam, to you. May Almighty Allah listen to your prayers. And in the meantime, 49 for the loss of 2. No ball continuing. As ball of Weber delivery way outside the off stump. And we'll have to wait and watch. No ball coming up. Freight. Right, Latif. Thank you. Oh, that is a huge hit. And this is border for you. And goodbye ball. We lost the ball. And this is the beauty of Adil Border. And that takes the score to 55. 50 comes up. They're 55 for the loss of 2. And Border has announced it himself. Nazir, well, I was talking about that, bringing down that asking rate. Now it comes down to 9.34. Prior to this one, it was 10.06. And this is the beauty of a big hit. And once again, momentum seems to be shifting other way. बॉर्डर इस बार बॉर्डर क्रॉस करते हुए और बेहतरीन स्ट्रोक के साथ वहां पर अपना योग और कुल मिलाकर टीम का योग बढ़ाया 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस प्रकार के बल्लेबाजी की आवश्यकता है जिसकी कि हम लगातार कमेंट्री बॉक्स में टिप्पणी कर रहे थे कि यहां से शुरुआत बेहतरीन चाहिए। और जिस प्रकार से ये आदिल बॉर्डर ने स्ट्रोक खेला, कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास लौटा होगा। शब्बीर अहमद भी हमारे साथ, डॉर खजर के साथ मीर जावेद भी इस मुकाबले का आनंद लेते। शाह कयूम हमारे रेगुलर वीवर और लगातार इस मुकाबले पर कड़ी निगाह रखे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। आइए जुड़ जाइए। आदिल बॉर्डर है बीच में, उनका साथ दे रहे हैं मुतहर। क्या खूबसूरत मुकाबला, रोमांचक की स्थिति। और इस समय 55 पे 8.2 के बाद 109 रन अभी भी बनाने हैं और 70 गेंदें बची हैं। तो क्रिकेट जिसे कि ताबड़तोड़ भी कहा जाता है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाज अगर यहां से 30-40 रनों की साझेदारी और निभा लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में रोमांचक स्थिति आ सकती है। लेग स्टंप पर थी शाहीन गेंद, विकेट कीपर भी चौके और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। वाइड का इशारा, तो संभवतः 5 अतिरिक्त रन और खाते में आते हुए और कुल योग बढ़ता हुआ 50 के बाद 55 के बाद 62 विकेट के नुकसान पर 8.2 के बाद। Really spoiling the party for Spawn and Strikers Magam. Basit Bashir is working for the betterment of Terra E Casa. He has conceded too many runs. Look at, he has conceded 26 so far, and that is really going to add insult to the injury. 62 विकेट के नुकसान पर इस बार क्या जबरदस्त गेंद, सिर्फ खड़े रह गए और गेंद सीमा को वहां पर चीरती हुई स्टंप्स को ले उड़ी। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ 60 पे 3। See, this is unbelievable stuff from this man. We're just praising the talent of Adil Border and others, but he has produced a beauty, unbelievable delivery and castled him, cleaning him up and clean bowled. He looks back, bamboozled, and he has to walk back. There goes wicket number 3, and but look at that. Basit Bashir conceded too many runs in the form of extras. All of a sudden, he brought the momentum back. Bowled that Yorker length delivery, cleaned him up, castled him, and Adil Border is walking back slowly and taking long steps back to the pavilion. And once again, crowd comes alive. And it's a high time and again I love to throw it out. Commentators Kasnazi, मुनव्वर भाई, एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर जिस प्रकार से हालांकि काफी खर्चीले साबित हो रहे थे और मैच के तुरंत बाद काफी विवाद में रहते, काफी चर्चित में रहते, लेकिन यहाँ पर एक विकेट लेने के बाद वो भी आदिल बॉर्डर का, तो मैं समझता हूँ शायद एकदम से जो मोमेंटम है उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है। Exactly, momentum has not only momentum shifted, but that will definitely mean he has bowled a ball of the century and has illegal. And what are you talking, man? He's bowled
bowling like that of sidearm action, like that of Malenga Selenga, and more than that, he should work on the basics, and he should ask the authorities to send him to Chennai and get him tested there. And after that, we shall come to know what's wrong with him. And at the moment, he seems to be okay. Sal Jagir and Saki and Abdul Hamid and others, thank you for tuning into the lab. Arshid Lon, walaikum salam brother, and walaikum salam to entire the family of JG Sports Time. This broadcast is brought to you by Akafan Station and the Sports India Shining Star Pampur and Fashion Fista Real Estate Pampur and MHA Multi-Fashion Branded Store. And it's time to welcome Bahid and others, Shahid Shokat and others to join the live broadcast. Score is 60 for the last of 3. Still a long way to go. Don't go anyway. Don't fade away. Dear beloved viewers, come back. It's game on here at the centre. Don't say that we have lost the interest in the match. You must be interested in watching and catching all the fun, and still the ebbs and flows of the game are really on top. 60 पे 3.3 के बाद और तीसरा विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज का आमंत्रण हुआ क्रीज पर वे पहुंचे हैं और देखना है किस प्रकार से वो बासित का सामना करेंगे। अच्छी गेंद इस बार मिडल स्टंप पे फेंकी हुई, हालांकि खुद वहां पे प्रयास जरूर किया फील्ड करने का, लेकिन असफल रहे और 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ दोनों बल्लेबाजों के 61 पे 3 9वें ओवर में। और अभी भी 103 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए 68 गेंदों से टेरा ई कासा को 164 आपको याद होगा। बट सजाद राही, लतीफ सजाद गनई और आसिफ शेख भी हमारे साथ बने हुए, कहीं जाइएगा नहीं, जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़ जाइए। क्रिकेट का महासंग्राम इस समय बीच मैदान में स्पार्टन स्ट्राइकर्स माघम और टेरा ई कासा के विरुद्ध चलता हुआ फाइनल मुकाबला वैली कप पांजीपोरा का। बासित इस ओवर में अगली बार उनकी गेंद, अच्छी गेंद इस बार रॉफ मिडल पे आती है, इसको खेला जरूर, 1 रन पूरा कर रहे हैं, हालांकि विकेट कीपर खुद जब तक उसको फील्ड करते तब तक का 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ ही कुल जोक बढ़ता हुआ 62, 3 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 9वां ओवर प्रगति पर। आदिल और मुतहर की जोड़ी इस समय बीच मैदान में, हालांकि आदिल बॉर्डर आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और यहां से किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी ये देखना होगा, क्योंकि शुरुआत अगर आप कहेंगे लगातार अंतराल के बाद विकेट्स गिरते चले जा रहे हैं और वर्तमान रन गति 7.02 और रिक्वायर्ड रन रेट 9.13 और कहीं ना कहीं अगर यहां से एक साझेदारी पनपती है तो मुकाबला और भी ज्यादा संघर्षपूर्ण हो सकता है। अगली गेंद को सीधे बल्ले से कलाइयों के सारे मोड़ा, हालांकि पीछे खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड करते तब तक दूसरा रन भी, और इस समय नगाड़ों बाजों की आवाजें गूंजती हुई और ये फाइनल मुकाबला इस बात का दरे देता हुआ एक बड़ा कांटे की टक्कर का मुकाबला बीच मैदान में। 64 पे 3 9 ओवर पूरे हो चुके हैं टेरा ई कासा के। 64 for the loss of 3 after 9 overs. 11 overs are going to come. 100 they need. Exactly triple figure they needed. 100 needed by Terra E Casa to register victory and to lift to the title. So far we have seen current run rate is 7.11 and the asking rate, the required run rate is 9.09. That means it is still a long way to go. Don't go anywhere. Don't fade away. It's game on here at the centre, but credit must be given to the spot and striker bowlers. The way they kept their opponent side under check, they tightened the nose of the batters and they didn't allow them to flourish their innings. And Adil Border, who was trying to flourish his innings, he was castled with that beauty from Basit Bashir. And it's 64 for the loss of 3. Bahubali yet to arrive and Dr. Sajad is yet to come. Adil Khan is out in the middle and Mutair, he's been batting since ages, I must say, as per today's format is concerned. That's a good ball, a little ricochet there, a short extra cover for no run. It's 64 for 3 after 9 point a delivery. 64, 3 विकेट के नुकसान पर 9.1 के बाद बहुत ही लाजवाब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन और तीनों डिपार्टमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागाम के। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, हालांकि सीधे बल्ले से खेला और क्या आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट पे लगा के रखी है और जिस प्रकार से एक अतिरिक्त दबाव बनाने की कोशिश मैं समझता हूं पूरा श्रेय कप्तान स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागाम के को जाता हुआ। Exactly a slip in place. Gully back for the point. Sweeper cover. Drops down to the boundary. Short extra cover. Long off. Bit wideish. Long on. Bit wideish. Mid wicket. Almost at Kokana area. And a Scalag on the boundary. And this time clipped away. Down to the Scalag. Will get a single. 65 for 3. Mutairi is trying to rotate the strike. But I think he has used too many balls for his 15. He has been batting since over number 1. He has used 29 balls to get to 15.
काफी गेंदें अभी तक का जाया हुई है मुतहर से, लेकिन विकेट पे बने रहना होगा और स्कोरबोर्ड को भी गतिशील रखना होगा क्योंकि आस्किंग रेट धीरे धीरे से बढ़ता चला जा रहा है। 9.43 का इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, हालांकि स्क्वायर लेग की ओर जब तक उसको फील्ड किया जाता विकेट कीपर खुद फील्ड करते। 1 रन और पर्याप्त समय था और 1 रन के साथ ही रनों की गति में वृद्धि होती हुई 67 रन 3 विकेट के नुकसान पर यह पारी का 10वां ओवर प्रगति पर और अभी भी 98 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए टेरा ई कासा की टीम को। We would definitely love to thank New Global Sports Sangrama also for backing us. In the meantime, it's 66 for the loss of 3. Thank you, Kid Hilal, Gulzar Ahmed and Mir Hassan for backing. Oh, what a delivery! Unbelievable stuff! And cleaned him up, castled him, clean bowled. And this is in the first case, Nazir. Third one is bamboozled, cleaned him up, clean bowled. Getting a batsman clean bowled is of high stature, and you need a bowler of that stature. And here you got that man. And in the end, he has the last laugh for Mutahir, and he has used 30 balls for his 15 runs, and now being castled, cleaned him up, bamboozled, and all of a sudden the last away there comes. I think it's going to be Dr. Sajjad to walk in. टेरा ई कासा के बल्लेबाजों की अगर बात और देखें, जो शुरुआत में 2-3 बल्लेबाज हालांकि आउट होकर पवेलियन लौट गए हैं और यहां बात एक और स्पष्ट हुई है कि बिल्कुल भी उनका फुटवर्क इस्तेमाल नहीं हो रहा है और लगातार अपनी जगह खड़े खड़े स्ट्रोक्स देने के चक्कर में समझ नहीं पा रहे हैं और इस समय गिलियां बाहर बिखरती हुई और कुल मिलाकर कहना चाहिए 66 पे 4 और इस समय शाहिद बिन रशीद भी शाह कयूम के साथ, बलदेव सिंह और इनू भी शाकिर भट्ट के साथ, मशूक ठोकर भी इस मुकाबले का आनंद लेते हुए आइए जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स, आपका चाहिए क्रिकेट का मंच और इसमें समय समय पे क्रिकेट के हर कोने की खबर आप तक पहुंचती हुई सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से जुड़ जाइए और आकर्षक फाइनल मुकाबले क्रिकेट का महासंग्राम भिड़ंत होते हुए समय बीच मैदान में और कहना चाहिए बल्ले और गेंद के बीच संघर्ष चलता हुआ और अब तक गेंदबाजी हावी रही है इस मुकाबले में। 66 पे 4 10वें ओवर में क्या कहना गेंदबाजी का और धीरे धीरे से, हालांकि क्रिकेट महान निश्चिंताओं का खेल, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक का गेंदबाजी देखने को मिली है कहना चाहिए कि चारों खाने चित करते तहस नहस करके रखा है बल्लेबाजी को। अभी भी 6 विकेट का आना बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से शुरुआत हो चली है। Interesting, Nazir. Dr. Sajjad is talking to sport and striker players. I welcome you at the crease. I have been playing with you guys too, and just praise myself out in the middle in the meantime. And he was welcomed the very first ball, right and money on target, and copybook back to the bowler. No run. It's 66 for the loss of 4. And interesting call made by Dr. Sajjad to sport and strikers Magam players that I'm your colleague. Welcome me at the crease. 10 ओवर पूरे पहली दूसरी पारी की आधी जो पारी है वह समाप्त हो चुकी है। 10 ओवर में 66 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां, हमारे चाहिए वीवर वुलर प्रीमियर लीग 17 2022 के अंतर्गत फाइनल मुकाबले का जो सूचना है वो ये है कि 7 अगस्त को इस रविवार को होने जा रहा है और जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसार उस फाइनल बड़े मुकाबले का सीधा प्रसार आप तक पहुंचाया जाएगा जरूर। लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति यह है 10 ओवर में 66 4 विकेट के नुकसान पर 60 गेंदें 98 रन 6 विकेट हाथ में। किस और मुकाबला दिखता इस समय अगर बात करें इस मुकाबले की? Well, thank you, Mr. Kinfruit and others, and I think Nazir is doing quite commendable job. Thank you. It's 66 for the loss of 4 after 10 overs. Halfway down, Ishfaq, the man who sent things ablaze in inning number 1, the man who's behind this big target, this big building block, is this man Ishfaq. He scored 19 ball 50. Then he was castled on the very next ball of the 20th ball of his innings, and he begins the very fresh over. The very first ball played out was the short extra cover for no run. It is 66 for the loss of 4. 66 4 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर इस समय प्रगति पर 98 रन अभी भी बनाने हैं। 164 है विजय लक्ष्य। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद अजीब ढंग से खेला जरूर, हालांकि शानदार क्षेत्र रक्षण जितनी भी प्रशंसा की जाए और उतनी कम है। क्या बेहतरीन और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की याद दिलाते हैं इस प्रकार के इस प्रतियोगिता में। Well, really feeling has been another wonderful stuff from sport and strikers Magam, and they've really been up to the mark. They're on their toes. And they've really been exceptional feeling. Their feeling has been really exceptional, and they've really been 360 degrees on the field today. Wonderful feeling, great exhibitional feel from their fielders.
66 4 विकेट के नुकसान पर ये गेंद अच्छी गेंद इस बार फीदे वहां पर खिलाड़ी के हाथ में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। हालांकि निराश अपने स्ट्रोक से गैप का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन वहां पे गैप का इस्तेमाल नहीं कर पाए, टाइमिंग सही नहीं थी, और जिसके चलते यहां पर कोई रन नहीं बना। स्कोर अभी भी विराम लगा हुआ रन गति पे 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर प्रगति पर। फैसल वार, शक्ति भट्ट और फेरोज अली हमारे साथ बने हुए। अगली गेंद को खिलाड़ियों के सर के ऊपर से निकाल दिया और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। लंबे समय से इस प्रकार के इस स्ट्रोक की आवश्यकता थी और अंततः सफल हुए वहां पर बल्लेबाज। 4 रन और खाते में जुड़ते 70 हो गया है 11वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे। Well, Faisal, this is the Sam Ishtiaq and you're talking about, and I throw it out Ishfaq. It is Ishtiaq who scored that brutal 50 of 19 balls, and that's a wonderful stare. But up is Shiva down to the third man boundary for 4, 70 for the loss of 4. And Magam strikers, they don't want boundaries coming their way, they want only wickets coming their way. अगली गेंद और इस बार क्रीज छोड़कर बाहर निकल गए थे, हालांकि खेलने की कोशिश, रन लेने की कोशिश, लेकिन बना किया वहां पर। हालांकि स्कोर बोर्ड को गतिशील रखना जरूरी होगा यहां से कि आप बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं। इस समय 6.36 और रिकॉर्ड रन रेट की अगर हम बात करें 10.44, और ये कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि 164 बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 11 ओवर में 70, 4 विकेट के नुकसान पर बचे हुए 9 ओवर से, यानी कि 54 गेंदों से अभी भी 94 रन बना रहे हैं, 6 विकेट हाथ में है। धीरे धीरे से इस समय परिस्थितियां जो है वो अनुकूल गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी करना, हालांकि डॉक्टर सजाद बीच में है, काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। अच्छे खासे दिग्गज बल्लेबाज है डॉक्टर सजाद और उनका साथ दूसरे आदिल खान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस जोड़ी पे काफी कुछ निर्भर करेगा। आशाएं बनी हुई है क्रिकेट के समर्थक और दीवानों के, और किस प्रकार से अपने कप्तान और समर्थकों के विश्वास पे खड़े उतरते हैं ये देखना होगा। डॉक्टर सजाद की गेंद, डॉक्टर सजाद के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर बोला स्क्वायर लेग की ओर, जब तक उसको फील्ड किया जाता 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 71, 4 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर में इस समय कुल योग है टेरा ई कासा का, और आपको याद होगा 164 बनाने हैं इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम करने के लिए टेरा ई कासा को। एक बार फिर जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी चहीते व्यूअर्स का स्वागत अभिवादन करना चाहेंगे। लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले का आनंद ले सके, क्योंकि खूबसूरत मुकाबला हर करीब चारों ओर जहां पे नजर दौड़ाई जाए, दर्शकों से खचाखच मैदान भरा हुआ इस खूबसूरत फाइनल मुकाबले का आनंद लेते हुए। और आप भी जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और क्रिकेट के चाहते मंच के साथ। इस बार फिर गेंद वहां पर बाहरी किनारा लेने के बाद विकेट कीपर भी चूके और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन, ऐसे तैसे करके 4 रन और खाते में मिले। हालांकि निराशाजनक प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है अगर हम कुल मिलाकर इन 4 बल्लेबाजों की बात की जाए जो अभी तक का पवेलियन लौट चुके हैं, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, एक साझेदारी की आवश्यकता, और आप सफल तरीके से इस स्कोर का पीछा कर सकते हैं। 75 for the loss of 4, catch gone down, and in addition to that a boundary coming Terra E Casa's way. They're 75 for 4. Next ball, and the batsman Adil Khan, tapping that one in front of point, wanted to escape for a quick single, but saw the fielder pouncing on the ball and he retracted back to the crease in time. 75 for 4. We are in over number 12 of the match. Every run is worth and weight in a gold. Every run is golden here at the moment, and every wicket coming bowling sideway, they will definitely love to wrap up things as early as possible. 75 पे 4, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर के सम्मानजनक रूप से खेला बगैर किसी रन के, और स्कोर अभी भी 75 पे 4। ये 12वां ओवर प्रगति पर 11.4 ओवर की गेंदबाजी, 50 गेंदें और 89 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। शक्ति भट्ट, साहिल जिगर हमारे साथ बने हुए इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए धन्यवाद सभी व्यूअर्स का, और इसी प्रकार से अपना प्यार विचार देते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए ताकि सीधे प्रसारण और भी बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सके। आदिल खान और सजाद डॉक्टर इस समय बीच मैदान में बने, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से वहां पर चौकाया गेंदबाज ने और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, 75 पे 4 12वें ओवर में। Well, exactly, we're into the 12th over last ball coming up. Record rate goes to 10.90. And John Ibn Mohideen, thank you. Junaid Ibn Mohideen, thank you. Shakayum and Tanveer Ahmedbad, thank you for your love and support. In the meantime, last ball of the 12th over coming up. Oh, that is in the air. It's gonna sky up, but it will definitely drop short. And it drops in the no man's area. And in the meantime, both the batters fetch 176 for the loss of 4, 12 done, 48 balls, 88 needed. They need at the rate of 11. Now, the required run rate goes to 11.
हर गुजरते ओवर के बाद इस समय आस्किंग रेट 11 तक पहुंचता हुआ और धीरे धीरे से इस समय परेशानी बढ़ती हुई टेरा ई कासा के बल्लेबाजों के लिए। हालांकि यहां से विकेट्स को भी सुरक्षित रखना होगा, स्कोरबोर्ड को भी गतिशील रखना होगा। दुविधा की स्थिति, कैसे किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे और यहां से जिस कला की आप बल्लेबाज है उस कला और शैली के साथ अगर बल्लेबाजी करते हैं तो मैं समझता हूं वही बल्लेबाज की महानता होगी। Thank you, Mir Mohammad Akif, Junaid Mahyuddin, Shakayum and Sahil Jigar. In the meantime, Ishtiyaq begins the fresh over 76 for 4. The very first ball, wanted a slog at it, missed the liner ball completely. Thank you, Sahil. Scorer man 76 for the loss of 4. Dot ball to start with. 47 balls, 88 needed. Nazir, look at required run rate. It propelled to 11.23. 76 पे 4 और 11.23 इस समय रिक्वायर्ड रन रेट। धीरे धीरे से इस समय परेशानियां बढ़ती हुई। इस बार क्रीज से छोड़कर, क्रीज से हट करके खेला, उसको पीछे खिलाड़ी है, देखना है रोक पाते अथवा नहीं। जब तक उसको फील्ड किया था लगभग सीमा रेखा के 1-2 कदम अंदर, तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के लिए 1-2 रन और खाते में जुड़ते हुए। 78 हो गया है कुल योग 13वें ओवर में। और साइलेंट नाइट, रूफुल मकबूल, मोहम्मद इकबाल शेख और शक्ति भट्ट इब्तियाज शाह कयूम के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए इस संघर्षपूर्ण मुकाबले का आनंद लेते। धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। इस ओवर में अगली बार इश्तियाक की गेंद और इस बार जबरदस्त प्रहार, लेकिन वहां पर खिलाड़ी को भेद नहीं पाएंगे और निश्चित तौर पे 1 रन बनने का मौका था। 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता 79 रन और वर्तमान रन गति 6.32, रिक्वायर्ड रन रेट 11.22 कहना चाहिए। इसमें धीरे धीरे से परेशानियां बढ़ती हुई टेरा ई कासा के बल्लेबाजों के लिए। 79 पे 4, 12.3 के बाद इस बार जबरदस्त स्ट्रोक और क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है। गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ ही दर्शनीय स्ट्रोक दर्शकों के उत्साह का ठिकाना नहीं है और कुल योग पहुंचाया 85 पे 4 13वें ओवर में। Oh, you can listen that roar from the crowd and they are beating the drums and in jubilation. That was a wonderful shot from Dr. Sajjad and he sends that on a widish extra cover for 6 and that 6 takes the score to 85 for the loss of 4. Now the asking rate comes down to 10.77 and prior to that 6 it was 11.23 and that's what happens when a batsman hits a 6. Next ball coming up. Ishtiyaq to Dr. Sajjad. Oh, pulling that one. Oh, that bounced in front of the fielder there in mid-wicket area into the boundary for 4. 10 up to Skamos to 89 for the loss of 4 after 30 overs. That means they need at the rate of 10.47 and Dr. Sajjad is playing the spoil spot for Spartan striker Smagamir. And look at the fielder. He was stationed there at the Karkana area. And Ishtiyaq believed that for a while he might be coming into the boundary, inside the boundary there. He might get to the ball on the full, but after that bounce ball crosses over to the boundary. 4 more runs, 1 more run added to the tally. 90 for the loss of 4, 13 done. 13 ओवर समाप्त, 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 74 रन बनाने हैं 42 गेंदों से। हालांकि क्रिकेट मानव चिंताओं का खेल है, T20 ताबड़तोड़ भी इसे कहा जाता है और ये संभव है आप इस रन चेस को पार कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विकेट्स को सुरक्षित रखना होगा और दूसरी ओर गेंदबाजों की कोशिश होगी एक योजनाबद्ध तरीके से फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करके यहां से विकेट चटकाएं और इस मुकाबले में अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करें। और उधर जेके स्पोर्ट्स टाइम के सभी व्यूअर से अनुरोध होगा कि आइए और दोबारा जुड़ जाइए इस मुकाबले में। संघर्षपूर्ण मुकाबला, कांटे की टक्कर का मुकाबला, भिड़ंत होती हुई महासंग्राम, क्रिकेट का महायुद्ध इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। 90 पे 4 13 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन अभी भी बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आकाश नजार हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई आपका। और इसी प्रकार से अपना प्यार और विचार देने के लिए बहुत बहुत स्वागत जेके स्पोर्ट्स टाइम की पूरी कमेंट्री टीम द्वारा। जहूर भट्ट और साकिब, बहुत बहुत धन्यवाद साकिब भाई आपका। साहिल जिगर भी अशरफ भट्ट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं इस खूबसूरत और आकर्षक विश्वसनीय फाइनल मुकाबले को, जो कि वैली कप पांजीपोरा 2022 के अंतर्गत बीच मैदान में चलता है। 13 ओवर समाप्त, 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 74 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 42 गेंदों से आदिल खान 15 पे नाबाद और डॉक्टर सज्जाद उनका साथ देते हैं 12 पे नाबाद 5 गेंदों से। और क्या कहना, इस समय वर्तमान गति 6.92, रिक्वायर्ड रन रेट 10.57। अशरफ भट्ट और एक बात और, अपने चहीते व्यूअर मीर जावेद, अशरफ भट्ट, इमाद गिलानी, फैसल मकसूद और ये ऐसे चहीते व्यूअर है जो सुबह से लगातार हमारे साथ बने हुए। मैं समझता हूँ जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी उनके काम।
Exactly. We have a prayer for all of our beloved viewers. May Almighty Allah bless you. Thank you, Bilal Gulzar Mir, for your love and sport. You should surely commensurate of international quality. Thank you for your love and for sport. And we are really indebted to your love. And I love to throw out a word. Commendable. Incredible. Thank you. 90 for the loss of 4 after 13 overs. Conversation going on. They are in a hurdle. And this is the high time to work on to the basics. Bring that man onto ball. It's 90 for the loss of 4. 90. It's 90 for the loss of 4 after 13 overs. 7 overs remaining. 42 balls, Nazir, are gonna come. They need 74 runs. Current run rate is 6.92. And required run rate is 10.57. Somebody writes in race, but myself, Munawar Tanveer, you can find me through Munawar Speaks on FB, and my colleague Sheikh Nazir in Hindi, you can also find him on social media. Thank you, brother. And Kaka, Zuhur Bhatt, Suzanne Ali, Ilahi Shakur, Akib Bhatt, Ishfaq Pare, and Mir Mohammad Akib, Riyaz Sheikh. Thank you all the beloved viewers tuning into the live broadcast. 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं. 90 रन 4 विकेट के नुकसान पे. ये है लेखा जोखा इस दूसरी पारी का. और आपको याद होगा 163 रन बनाए थे निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर. स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागम की टीम ने 164 रनों का विजयी लक्ष्य और उसका पीछा करने उतरी. टेरा ई कासा की टीम इस समय 90 पे 4. 13 ओवर समाप्त, यानी कि 7 ओवर का खेल बचा है. 42 निर्धारित गेंदें बची है. 74 रन बनाने हैं. 6 विकेट हाथ में 10.57 के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ. और यहां से डॉक्टर सज्जाद और आदिल खान की जोड़ी बीच मैदान में. हालांकि 17 गेंदों का सामना किया आदिल, 27 गेंदों का सामना किया है. और कहीं ना कहीं बिलाल गुलजार मीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और जिस प्रकार से आप अपना प्यार और विचार, और यदि आप चाहें अपना स्वभाव भी रख सकते हैं, अपना सुझाव भी रख सकते हैं, और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर सीधा प्रसारण लेकर के आपके पास पहुंचे. धन्यवाद सभी व्यूअर्स का. रईस बशीर भी केएस दत्ता के साथ बहराज लोन सोपोर से इस मुकाबले का आनंद लेते हुए. Thank you, KS Dutta, for your love and sport, and Mehraj Lon Sopor and Manzoor Haji is watching. Thank you all the beloved viewers. He's talking about that crowd. We got a good size of viewers, and people are really thronging into the stadium to witness the grand finale. Oh, that's India. This might be the man, Dr. Sajjad. Oh, he puts down, and this is going to be the costliest drop of the match. Has he dropped the match, Nazir? What do you think? देखिए, एक पर्याप्त यहाँ पे मौका मिला था डॉक्टर सजाद को लपकने का, लेकिन कहना चाहिए कि जीवन दान मिलता हुआ. और कितना महत्वपूर्ण इसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ेगा टीम स्ट्राइकर्स मागाम को. और ये देखने वाली बात होगी. फिलहाल एक जीवन दान मिलता हुआ और एक बड़ी पारी में परिवर्तित करना होगा इस पारी को. क्या इसमें सक्षम हो पाएंगे अथवा नहीं. 91 पे 4. 14वां प्रगति पर मुश्ताक है गेंदबाज. इस बार ऑफ स्टंप से लपेट कर उसको खेला. 2 खिलाड़ियों के बीच में से जानबूझकर खेला हुआ स्ट्रोक. हालांकि वहां पर खिलाड़ी है तैनात. 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और 1 रन के साथ ही दोनों बल्लेबाज संतोष. कुल योग 92. 4 विकेट के नुकसान पर 14वां ओवर 13.2 के बाद अभी भी 72 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए. 10.80 समय आस्किंग रेट. Somebody nailed it to perfection, says that they dropped the match, but it will be early to say. And if they manage to knock him over on the very next ball, that can really set the tone for their side. Let's find it out. Oh, another ball, and he's running openly with that single, and this is the culprit there at short extra cover. But that was an easy catch. Had he hold his nerve onto that one, I would have definitely loved to throw it out that. It is a blinder of a catch, but it wasn't. So 93 for the loss of 4. We are in over number 14. 4th ball coming up. Mushtaq Ahmed is bowling to Adil Khan. Adil Khan on strike, comes down the track. Oh, beautifully bowled, and shot for caught behind, and umpire raises the finger. Wicket number 5 goes down, and all of a sudden, and crowd comes alive once again, whistling around the park. They're beating the drums, and everything is going on. Drama continues around the park. अंतरराष्ट्रीय स्तर की याद दिलाता हुआ अगर हम इस क्रिकेट के इन समर्थकों को देखें, और जिस प्रकार से इस समय गूंजता हुआ ये पूरा स्टेडियम, कहना चाहिए कोलकाता का ईडन गार्डन, और फाइनल मुकाबला अंतरराष्ट्रीय स्तर में भारत तथा पाकिस्तान के विरुद्ध, और इसी प्रकार का इस समय हर्षोल्लास बीच मैदान में दिखता हुआ. 93 पे 5 14वें ओवर में. और क्या कहना इस टीम का, क्या शुरुआत कांटे की टक्कर का मुकाबला. कभी पलड़ा गेंदबाजी के ऊपर और कभी बल्लेबाजी के ऊपर, और क्रिकेट की महानता इस समय बीच मैदान में दर्शती हुई. Exactly, we're talking about that crowd, and this has really been
magnificent, unbelievable crowd we got around the park. We got a great attendance like that we have on angry mobs and on our Eid prayers. But today this has really been an outstanding crowd around the park, and this has really been scintillating around the park, lightning. And look at the crowd, they're beating the drums, they're whistling, they're using different kind of instruments to beat and to make that noise come out. And in the meantime, it's 93 for the loss of 5. We are in over number 14. Fifth ball coming up. The newcomer who walks in is Gawar. गौहर पहुंचे हैं ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी और काफी कुछ निर्भर करेगा। क्रिकेट के समर्थक एक आस लगाए हुए, आज उनको निराश नहीं करना होगा और क्या उनको वो आज उन रोमांच की स्थिति का इस मुकाबले में पैदा कर सकते हैं, क्या बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या अपने समर्थकों के विश्वास पे खरा उतर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से जुड़ जाइए और मजा लीजिए इस मुकाबले का। 93 पे 5 ये गेंद गौहर के लिए अंतिम समय में हल्का तिरछे बल्ले से उसको खेला जरूर, सीधे वहां पर खिलाड़ी को भेद नहीं पाए। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी 93 5 विकेट के नुकसान पर। 13.5 के बाद पारी का 14वां ओवर प्रगति पर और आखिरी गेंद लेकर के तैयार मुश्ताक, जो कि 2 सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं और अब तक इससे पूर्व 17 रन खर्च कर चुके हैं। एडवोकेट हिलाल अहमद हमारे साथ जुड़ते हुए, गौहर नीड्स टू प्ले हिज नेशनल गेम। जी हां बिल्कुल, और जिस शैली के बल्लेबाज हैं उस शैली के अनुरूप उन्हें बल्लेबाजी करनी होगी यहां से, यदि इस मुकाबले में अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो। इस ओवर में अगली बार इस बार फिर ऑफ स्टंप पर सफल करते हुए, हालांकि खेला जरूर, 1 रन पूरा कर रहे हैं और 1 रन के साथ ही दोनों बल्लेबाज संतोष 94 5 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर समाप्त, 6 ओवर का खेल बचा है, 36 निर्धारित गेंदें, 70 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 5 विकेट हाथ में, आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। गौहर और डॉक्टर सजाद की जोड़ी बीच मैदान में और कहीं न कहीं अभी भी आशाएं बनी हुई गौहर और डॉक्टर सजाद के होते हुए। Thank you Zaidwani for your love and support. For sending in the digital token of love to Jiggy Sports Time. We're really indebted to your love. We are really thankful to you. Oh, but look at that roar from the crowd time and again, and that's really making it more beautiful, more attractive. Thank you. You can do it, Gawar. And Gawar Bhatt walks into the middle after the fall of Adil Khan, and he is believed to be the big man out in the middle. And all the beloved viewers, they're putting premium on this man, and they believe that he has got those abilities. He can adapt himself at any instant of the game, and he can take his side to some sort of respectability, and he can be the man to take his side home today. And if he manages to do so, and then it won't be wrong to mention him, the big guy, the danger man out in the middle, Mir Shams, Batting Raja, Tayyib Bhatt and others. Thank you. 94 for the loss of 5. And this is the Bahubali out in the middle, Gawar Bahubali, and everyone believes that he can change the match, and that's a good shot on driven, but straight along on field will get a single nonetheless. 95 for 5. We are into the 15th over of the match, and this broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, Anthem Sports, India Shining Star Pampur, Fashion Pista, Real Estate Pampur, and MHM Multi-Fashion Branded Store, Magam Agricola against Petrol Pump. In the meantime, 95 for 5. Next ball, that's a good ball. Stepping bit leg side, Dr. Sajad wanted to open up the offside, doesn't succeed. Dot ball Nazir, 95 for 5. डॉक्टर सजाद और गौहर बाहुबली समय बीच मैदान में और काफी कुछ निर्भर करेगा। क्रिकेट के समर्थक आशाएं लगाए हुए कि ये वो जोड़ी है जो इस मैच का पासा पलट सकती है। इस ओवर में अगली बार इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले से बैकफुट पर जाकर के खेला जरूर, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ चहलकदमी करते हुए अपने छोड़ बदल लिए। 96 5 विकेट के नुकसान पर 15वां ओवर पारी का और एक बार फिर गौहर बाहुबली सबके चहीते और एक ऐसे बल्लेबाज जो कभी भी किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं, इस समय बीच मैदान में सामना करने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद अंतिम समय में, हालांकि रन जरूर लिया, वहां पर अच्छी रणनीति, एक सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर बोर्ड को गतिशील रखते, जानते हैं कि यहां पे विकेट पे बने रहना कितना महत्वपूर्ण होगा उनके लिए और उनकी टीम के लिए। 97 पे 5 14.4 के बाद और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें 12.56, लेकिन इस समय डॉक्टर सजाद और गौहर बाहुबली बीच मैदान में। डॉक्टर सजाद सामना करने के लिए इस ओवर में इस बार जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश, लेकिन अंदरूनी किनारे पर लगते हुए 1 रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे लेकिन मना किया वहां पर गौहर ने और 1 रन और खाते में जोड़ते हुए 98 5 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर में आखिरी गेंद आनी बाकी और सामना करने के लिए गौहर बाहुबली। Akri, the last ball coming up, beg your pardon, dear blood viewers. I throw it out in India, and last ball, that's a good shot. We'll have to wait and watch. Will this beat the field? It looks like that's gone all the way for 4, and Bahubali has announced himself lately, Nazir, but he has announced himself that I'm in, and there goes
Total moves to 102 for the loss of 5, and there she goes down towards the boundary line for 4 and through the mid-wicket area, and score goes to 102 for the loss of 5. Now Nazir, 62 needed of 5 overs, 30 balls, 62 needed. They require at the rate of 12.40. They are in with a chance. Don't go anywhere. Come back. We have a match on, game on here at the centre. 30 गेंदों से 62 रन बनाने हैं। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले का। आइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से जुड़ जाइए, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मुकाबले का आनंद ले सकें। खूबसूरत ऐतिहासिक मुकाबला और बीच मैदान में बाहुबली और डॉक्टर सजाद की जोड़ी बनी हुई, और कहना चाहिए कि 62 रन अभी भी बनाने हैं। 102 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पवेलियन जा चुकी है टेरा ई कैसा की। 164 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए, और एक बार सभी व्यूअर्स का जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से पूरी कमेंट्री टीम द्वारा स्वागत करना चाहेंगे, अभिवादन करना चाहेंगे, और जितनी भी प्रशंसा करनी होगी उतनी कम की जिस प्रकार से लगातार हमारे साथ बने हुए अपना पूरा सहयोग देते हैं। और इस समय बिलाल गुलजार मीर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे पास वो शब्द नहीं है जिससे हम आपका जो है अभिवादन कर सके। बहुत बहुत स्वागत। और इस समय स्थिति यह है, 15 ओवर समाप्त, 102 5 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदें 62 रन, 164 बनाने हैं। बीच मैदान में गौहर बाहुबली और डॉक्टर सजाद की जोड़ी। गौहर इस समय 7 में नाबाद 5 गेंदों का सामना किया, और बाहुबली 10 गेंदों से 26 रन बनाकर नाबाद है। और कहना चाहिए किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी होगी, और गेंदबाजी में एक और परिवर्तन मुख्तार को लगाया गया है। एक विकेट राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, और किस प्रकार से यहां से शुरुआत होगी, यहां से आगे किस प्रकार से मुकाबले को लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। पहली गेंद और जगह मिली ऑफ स्टंप पर, खेला जरूर लेकिन सीधे वहां पर क्षेत्र रक्षण के हाथ में। 1 रन और 103 पे 5, 15.1 के बाद करंट रन रेट की अगर हम बात करें 6.79, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 12.62। हर गुजरती गेंद के साथ इस समय लक्ष्य मुश्किल से मुश्किल होता हुआ। इस ओवर में अगली बार, इस बार गौहर के लिए हालांकि खेला जरूर, अपने स्ट्रोक से नाखुश है। एक रन पूरा कर रहे दोनों बल्लेबाज, चहलकदमी करते। 104 पे 5, 16वें ओवर में गौहर और सजाद की जोड़ी बीच मैदान में। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 28 गेंदों से 60 रन बनाने। 60 needed, 28 balls. What a tournament this has been. 12.86 is the required rate. Dr. Sajad on strike. Mukhtar comes and bowls to Dr. Sajad. Sajad plays it back to the bowler for no run. Dot ball. 27 balls. 60 need. Thank you, Sohail Mushtaq, for your love. And Silent Night. And Sadiq, Rehan Sadiq and Shakayum. Thank you once again. Silent Night, thank you for your love. It's your love. We are really indebted to your love. Thank you once again. I'm really thankful to you. Shakayum and Sal Jigar, 104 for the loss of 5. Over number 16 in progress. Fourth ball coming up. Dr. Sajad on strike. Up and over. Fielder coming underneath. Won't get there. In the end, one bounce. And that will allow the Dr. Sajad to fetch that. Single score moves to 105 for the loss of 5. Bilal Gulzar Mir, thank you. And he's talking about our combo. He's talking about Dr. Milan Tipnish and Sanjay Banerjee, thank you. Ashraf Bhatt and Ziad Zaid and Prince Yawa and Jangir Rashid, thank you once again. Next ball coming up, 105 for the loss of 5. But in the meantime, for 15.4 balls done, 105 for the loss of 5, 59 needed, 26 balls remaining. Mukhtar bowling his third away, has conceded 10 and picked up a wicket. Oh, that is a towering blow. Will this be a catch? Has that gone all the way? Let's find it out. Oh, a beautiful catch, but now the crowd has decided that he got imbalanced in the meantime, in that process of holding on to the ball. That's a 6. What could have been a blinder, and Gawar Bahubali, and his shot got the elevation, now got the distance. The fielder there at the boundary got imbalanced, and he touched the boundary ropes, and that's a 6. What could have been wicket number 6, and Bahubali stays alive. It's 111. Nelson on the board. Last ball. Mukhtar over down the leg side. It's going to be a wide. 112 for the loss of 5. Nazir. 112 5 विकेट के नुकसान पर ये पारी का 16वां ओवर प्रगति पर। पिछली गेंद पर बेहतरीन स्ट्रोक खेला था बाहुबली ने, हालांकि वहां पर प्रशंसा करनी होगी क्षेत्र रक्षक की, प्रयास उन्होंने जरूर किया, लेकिन तब तक उनका पांव बाउंड्री लाइन से टच हुआ था। अगली गेंद को उठा दिया है, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, नीचे खिलाड़ी, और गेंद सीधे वहां पर क्षेत्र रक्षक के हाथ में। और कहना चाहिए इस समय बाहुबली आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। क्या संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई मुकाबले में। 112 पे 6, 16 ओवर के 7
समाप्ति के बाद। Well, Bahubali isn't happy. Prince Mudassir, thank you, but wicket number 6 goes down. It's 112 for the loss of 6. Thank you, Mir Faik. Thank you, everyone, for your love and support. They believe that this is the combo of Milind Tipnish and Sanjay Banerjee. And in the meantime, we see in the back of great Bahubali. He's walking back to the pavilion. Prior to this one, he managed to fetch a 6, but this time round, Phil says, no, Bahubali, I'm not going to give you another opportunity. That will be the destruction and that will be the disastrous for our side. And now that comes, that catch brings an end and curtains down for Bahubali. It's 112 for 6 after 16 overs. Now 24 balls remaining, 52 needed by Terra E Casa to register victory and to lift to the title for the first time of Valley Cup Panzipora for the first time. 112 6 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं और कहना चाहिए जिस प्रकार से बाहुबली ने जबरदस्त प्रहार किया था, लगातार गेंदबाजी के ऊपर हावी हो रहे थे, लेकिन इस बार जाल बुना और पकड़े गए, वहां पर फील्डर ने लपक लिया कैच और छठे विकेट का पतन होता हुआ छठा झटका लग चुका है इस समय टेरा ई कासा की टीम को। 112 पे 4 ओवर का खेल बचा है, 24 गेंदें बची हैं, 52 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। आइए जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ और मजा लीजिए। संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय बीच मैदान में, क्रिकेट का महायुद्ध बीच मैदान में और संघर्षपूर्ण मुकाबला टेरा ई कासा और स्पार्टन टाइगर्स मागम के विरुद्ध चलता हुआ। स्पार्टन स्पार्टर्स मागम स्पार्टन स्ट्राइकर, क्षमा कीजिएगा। और इस समय उत्साह से लबरेज यहाँ कमेंट्री टीम भी जिस प्रकार से मुकाबला इस समय बीच मैदान में, और क्रिकेट के सभी समर्थकों और व्यूअर्स से अनुरोध होगा कि आइए और इस खूबसूरत मुकाबले का आनंद लीजिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम क्रिकेट का चहीता मंच इस समय सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाता हुआ। रूफुल मकबूल, उमर बुखारी और मुंतजिर हिलाल हमारे साथ बने हुए। सोएब लियाकत का धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। स्पार्टन स्ट्राइकर्स जो कि इस समय बीच मैदान में भिड़ंत करते हुए, हालांकि गौहर बाहुबली आउट होने के बाद पवेलियन लौट चुके हैं, डॉक्टर सजाद बीच मैदान में बने हुए हैं और ताहिर आए हैं नए बल्लेबाज। एक बार फिर अपने सभी व्यूअर्स से निवेदन होगा कि लाइक और शेयर करना ना भूलें और आइए इस मुकाबले का आनंद लीजिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम आपका प्रतीक्षा कर रहा है खूबसूरत मुकाबले का और इस समय सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। 112 पे 6, 16 ओवर पूरे हो चुके हैं, पारी का 17वां ओवर में प्रगति पर और शुरुआत होने जाइए। आइए मुनव्वर। 52 needed of 24 balls and record run rate goes to 13 now. It climbs to 13. They need 13 runs per over to register victory and to lift to the title. Thank you, Bilal Gulzar, Saeed Anam and Jahangir Rashid and Sahil Jigar. In the meantime, we are in over number 17 of the match. Terra E Casa needed 52 of remaining 24 balls to win the match. First ball of over number 17. Here comes Ishfaq Mallah. Crosses umpire and bows. The very first ball played it back to the ball of a no run. It's a dot ball to start with. 23 गेंदों से 52 रनों की आवश्यकता। संघर्षपूर्ण मुकाबला इस समय बीच मैदान में और दोनों टीमों की तुलना करें तो इसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई। ओवर में अगली बार और बस जबरदस्त प्रहार करने की कोशिश और वहां पे जोरदार अपील की, हालांकि वहां पर आउट होकर पवेलियन लौटते हुए और खुशी का ठिकाना नहीं है इस समय स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागम का। 112 पे 7 97वें ओवर में क्या कहना चाहेंगे? It's a big blunder and a big breakthrough. Dr. Sajjad, the last hope, is walking back to the pavilion. In Hindi you call it Sone Pe Suhaga. That is really icing on the cake. And there goes Dr. Sajjad. He has to walk back and Doctor says, I'm still the senior buddy. Don't worry, Basit Bashir. I'm the big B. Thank you. It's 112 for the loss of 7. Now Dr. Sajjad is coming back and is exchanging his words. He's unhappy. And Tariq says, you may walk back. It's 112 for the loss of 7. It's 112 for the loss of 7 after 16.2 balls. And we'll have to wait and watch. What a match in the way here at the centre. Dr. Sajjad not happy, but sledging going on. And he lost the tempo in the meantime. We'll have to wait and watch. And look at that very area where it's going on. And it's the high time to maintain the discipline of the game. The game must be played in the real spirit. And they have lost the wicket of Dr. Sajjad and he's walking back. Gaur Bahubali comes across and he is going to convey a message to his batter. Just to bat according to the norms of the game. And goodbye and good luck, Bahubali. Well message conveyed by him. And we'll have to wait and watch. What a match underway here at the centre. And Terra E Casa, they are...
And this is totally against the spirit of the game, but we'll have to wait and watch. Dr. Sajad walks into the middle, and this isn't good, and he should walk off the field, and this is totally against the spirit of the game, and we'll have to wait and watch. And this is really disheartening, and Gaur Bahubali is teaching Basit Bashir something. देखिए क्रिकेट के नियम जो है उनके अनुसार आपको इस प्रकार से क्रिकेट का स्पोर्ट्समैनशिप दिखाना होगा। क्रिकेट जो कि इस समय पूरे विश्व में जिस प्रकार से आप नियम देखते हैं, क्रिकेट के अनुरूप आप जो है परिस्थितियां होती है, उनके अनुरूप एक स्पोर्ट्समैन को अपना वो कैलिबर दिखाना होता है और आश्वासन देना होता है। आप आउट है एक बार तो इस प्रकार से मान रखना होगा क्रिकेट के इस मुकाबले का। Well, really unfortunate. These things happen even at the international arena, but this kind of crowd thronging into the center, this is really against the spirit of the game. It hurts the real spirit of the game, and this isn't good. This isn't good for the health of the game at the moment. But we definitely love to see that umpires maintaining the discipline, and players will make their way, crowd will make their way out of the sun, and players will take their respective positions in the field. But at the moment, I should say that this is really unfortunate, very, very unfortunate. And this is really against the rule of law, and this is really against the game of glorious uncertainties. Unfortunate, and we definitely love to see that umpires maintaining the discipline and conveying a message to the crowd. Make your way out of the center, quick and cheeky. At the moment, it's 112 for the loss of 7. But literally, we can say that Spartan strikers Margam, they're really right on top, and they believe. They got to believe from here on they can win the match and they can lift the title for the first time. But we definitely love to request the crowd, please make your way quick and cheeky out of the center. This is really against the game of glorious uncertainties, and it's really gonna hurt the real spirit of the game. Very unfortunate. Once again, I would definitely love to say that is the reason the players from Kashmir can't make it to the international. It takes high caliber and class, it takes guts, and it takes talent to make your way to the international arena. That's why Kashmir boys will never make it to the international. Yes, it isn't everyone's cup of tea making it to the international squad. And this is what they are showing today. They're displaying what they are known for, and this is really unfortunate. Once again, it hurts the real spirit of the game, and we definitely love to request the organizers and the umpires who are officiating today's match. They should make sure that the discipline is maintained in its real spirit at the moment. But at the moment, it's Terra E Casa 112 for the loss of 7, Nazir, and I believe that they're on the losing side. But you can't say anything until the last ball is non-ball. Things can really change. This is matter of just an innings. The way Ishtiyaq scored that 19 ball 50 set the tone for the good chase, and now it's turn of the Terra E Casa. They need a man out in the middle who can set things ablaze and who can take his side home at this crucial juncture. But at the moment, the tempo is really up, not of the game but of the disturbance. And in the meantime, we would definitely love to take some comments, brief comments from Nazir. देखिए जिस प्रकार से इस समय खेल रोका गया है, थोड़ी सी विवाद यहाँ पे बाधा आती हुई मुकाबले में, लेकिन जिस प्रकार से हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने स्पष्ट कर दिया कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें, राष्ट्रीय स्तर पर भी आके लोकल लीग से हो रही है, तो इस प्रकार से हालांकि आप खेल के इस स्वाभाविक जो खेल हमारा है, स्वाभाविक खेल है, इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकते। आपके पास नियम है, नियम अनुसार आपको रहना होगा और जो भी नियम है उनका पालन करना होगा। आपके पास जूरी बैठी है, अंपायर्स है और उनका निर्णय हाथ में होता है, तो उसको मानते हुए मैं समझता हूँ खेल को रेस्पेक्ट देनी होगी, मान देना होगा, और यही स्वाभाविक खेल के लिए बहुत बढ़िया। और हमारे इस क्रिकेट क्षेत्र की अगर हम बात करें या क्रिकेट सिनेरियो की बात करें तो उसके लिए भी बेहतरीन हो सकता है। Exactly, but unfortunately we didn't want that sort of a curtailment in the game, that sort of interruption. But the live action interrupted because of people making their way into the center. Now the organizers are doing something from their side, and sledging it is just a part and parcel of the game. But the way Sajad lost to the composure and the calmness, and he wanted to hit with the bat, and this is really unfortunate. But we have seen sledging at the international arena, and Inzamam like guy, Vakar Yunus, Shoaib Akhtar is the big fish in that tally, and he'll love to hit the players with the bats even. But at the moment, the big moment in the game is umpires need to maintain the discipline of the game in the real spirit, and the message is being conveyed to the players of Spartan strikers Magam, and we'll have to wait and watch, and message is being conveyed. But at the moment it's 112 for the loss of 7, Nazir.
खेल की खूबसूरती को बनाए रखना होगा, खेल के मान को बनाए रखना होगा और यही बेहतरीन क्रिकेटर की निशानी है। हालांकि स्लेजिंग जिस प्रकार से हमारे सहयोगी कमेंटेटर ने भी स्पष्ट कर दिया कि ये खेल का एक हिस्सा है और इस प्रकार की गतिविधियां होती रहती है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें। लेकिन क्रिकेट को बांध देना मैं समझता हूं बहुत बड़ी उपलब्धि और किसी भी क्रिकेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयम और आत्मविश्वास के साथ एक बार चाहे जो भी निर्णय आपके हक में आता है, आपके हित में आता है या आपके अगेंस्ट आता है, उसको स्वीकार करना होगा। और इस समय बीच मैदान में वर्तमान स्थिति मीर शमस, रेहान सादिक, बिलाल गुलजार मीर and Mir Shams. Thank you. That's what we were conveying to Bilal viewers on Jig Sports Time. This is the voice of the Valley and we are here to promote the local talent, and this was a kind of a local tournament, and but we tried our level best, but once again as the rule of game, really unfortunate player. He got overcautious and was trying to hit the fielder on that occasion. That's really against the real spirit of the game. Amir Yasin Mir and Sahil Jigar and But thank you all the Bilal viewers for tuning into the live broadcast. 112 for 7. Next ball coming up. 112 7 विकेट के नुकसान पर और खेल दोबारा शुरू होता हुआ और इस समय 22 गेंदों से 52 रन बनाने हैं टेरा ई कासा की टीम को। ताहिर मीर और उनका साथ वाहिद दे रहे हैं इस समय बीच मैदान में पारी का 17वां ओवर प्रगति पर और अब सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ और एक बार फिर मुकाबला शुरू होता हुआ। 112 7 विकेट के नुकसान पर 16.2 के बाद 22 गेंदें 52 रन। ये गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद सीधी सपाट गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं। 112 7 विकेट के नुकसान पर 21 गेंदें 52 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट 14 से ऊपर का पहुंचता हुआ 14.86। Well, they need at the rate of 14. We'll have to re-bowl that one. That's a dead ball. 112 for 7. 21 balls, 52 needed. Oh, cleared him up. Another one bites the dust. They're falling like backup chords. 8 down. And Ishfaq Malla believes that they got their wicket and they got the man and they're right on top of the match at the moment. And I think it's their match to lose from here on. 112 रन 8 विकेट के नुकसान पर 16.4 के बाद 20 गेंदों से 52 रन और धीरे धीरे से मुकाबला इस समय स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागम की ओर फिसलता हुआ कहना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने आज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, पहले बल्लेबाजी का प्रदर्शन और गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन, जिसके चलते 112 पे 8 विकेट गंवा चुकी है टेरा ई कासा की टीम और 16.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद आदिल और ताहिर मीर की जोड़ी बीच मैदान में थी। हालांकि आउट होने के बाद इस समय स्थिति यह रह गई है 20 गेंदें और 52 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए यहां से टेरा ई कासा की टीम को। रिक्वायर्ड रन रेट 15.60। Support striker Smagam, they're really on top of the match. Mukhtar, they're pumped up. Ishfaq Malla, Basit Bashir, Tariq Makno, they are the happiest faces on the park today, and they're really just away from lifting the title for the first time. Panzipora Valley Cup, and it's going to be, to me, it's nearly going to fall into their kitty. What do you think? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज तीनों डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखने को मिली स्पार्टन स्ट्राइकर्स के, और तो कहना चाहिए वे प्रफुल्ल दावेदार थे इस प्रतियोगिता के फाइनलिस्ट और आज उन्होंने वे कर दिखाया। और जिस प्रकार से आत्मविश्वास से लबरेज भरे हुए उनके खिलाड़ी थे, और क्यों ना हो क्योंकि इस समय उन्होंने 112 पे 8 विकेट गंवा दिए हैं और 20 गेंदों से 52 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। 20 गेंदें 52 रन, ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार फिर कोई रन नहीं बना और अब 19 गेंदों से 52 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। परिस्थितियां गंभीर से गंभीर होती हुई इस ओवर में अगली बार। और इस समय व्यूअर्स से भी हमारा प्रश्न होगा, हमारा प्रश्न आपके उत्तर कि यहां से आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि यहां से मुकाबले का क्या होगा, कौन सी टीम इस वैली कप 2022 की दावेदार होगी, कौन इस मुकाबले को जीतेगा। और कमेंट्स के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वे जो हमारा विजेता होगा वो सबसे महत्वपूर्ण और कश्मीर स्पोर्ट्स टाइम द्वारा वो सम्मानित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया and thank you Nazir, and once again I love to throw it out because it's nearly our mother tongue and Kashmiri, then followed by Urdu, and it's 112 for the loss of 8 after 17 overs. 18 balls are going to come. They need 52 of 18 balls, Nazir, and you were talking about that, and our beloved viewers are hereby requested, write us who will win today's match, and let's make a trend that सबके मन में एक ही सवाल, Zenikus, and let's find it out. It's a question tag and you need to answer that question. At the moment it's 112 for the loss of 8. Write us, all the blood viewers, send in the digital token of law through digital stars, and you can also write us, will it be Terra E Casa winning the match, and will it be Sport and strikers
holding their nerve to go on to lift to the first title. Those who will write about this very game, who will win this match, will include every comment from you beloved viewers. We will be including your all the comments. Write us who will be the winner of Terra of this Valley Cup Panzipora Grand Finale, which is underway here at the center. Somebody writes in it, Toybot says Terra E Casa, and we'll have to wait and watch. Will he be right or not? Let's find it out. Batting Raja by 20, he says by 27. Who will win by 27? Do write us. Please rectify your comment and elaborate it and exhibit it in that fashion and manner so that we can understand. 112 needed, 112 for the loss of 8. There's still 52 needed. And Rehan Sadiq, thank you for your love and support. Keep sending in the digital token of law and do write us. It's over for Terra E Casa, says Ahmed. The next ball, oh, in the air, but it will definitely pass the two fielders. They're in the slip cordon and up over their heads down to the third man boundary for 4. 116 for the loss of 8. 17 गेंदे 48 रन और 44 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी 116 रन 8 विकेट के नुकसान पर। हालांकि मीर फैसल हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। टेरा ई कासा इज गोना बाइट द डस्ट जी बिल्कुल। और तैयब भट्ट भी तेरा ई कासा को अपना प्यार और विचार देते। उनका मानना है मीर ताहिर बिलाल गुलजार मीर हमारे साथ बने हुए हैं और एक चमत्कार ही पारी उनको जिता सकती है। इस बार ऑफिस से बाहर लपेटने की कोशिश, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 117 पे 8 और अब 16 गेंदों से 47 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। Well, 47 needed of 17 balls, Nazir. It was a wide ball. Now the asking rate passed 16. It's 16.59. And they need at the rate of 16.59 per over. In the meantime, next ball coming up. Basit, he has bowled, he has conceded 5 runs so far. Comes on to bowl with a huge run up. Comes in, comes running in and bows. Oh, that is a good shot, but straight to the fielder. They are backward a point. Hold this on to the catch. And it's wicket number 9. Is it a no ball? It looks like it was a no ball. It was a free, Nazir. He got overcautious in that while. And there is addition to the tally. 118 for the loss. Oh no, he's gone. He's walking back. It looks like. Yes, he's gone, but the way he's walking back to the pavilion, this is quite strange. I thought it's a no ball. He wasn't leaving the field at the very first instant. But look at this man. Now he's walking back to the pavilion. This is really quite strange, and I can't believe. And he's gone. It's 117 for the loss of 9. We are in over number 18. Now a wicket in hand. 47 needed of 16 balls. It's game over for Terra E Casa. Believe me, Nazir, it's Margam strikers match from here on. Can they produce a Bradshaw show way back in 2009? You remember that Champions Trophy? And they need such kind of a show here. And Roful Makbul believes that Terra E Casa, and he says something else. We won't include that thing. Roful Makbul, thank you for your love. It's really charging up a bit in our comment box too, and I would definitely love to say that oohs and ahs, and it's a kind of situation. The way Roful Makbul drop of that command, and Surat Lihaka says thank you Shakim, and the 117 for the loss of 9. 17.2 balls done. 117 पे 9, 17.2 के बाद आखिरी विकेट इस समय बीच में था। 16 गेंद 47 रन चले उस छोर से। राइट आर्म ओवर द विकेट और इस बार गेंद को सीधे हाथ में दिया और ये रहा खताब। स्पार्टन स्ट्राइकर्स मागम के नाम वो बने वर्ष 2022 वैली कप के विजेता और इस प्रकार से ताज उनके सर सजा है इस फाइनल मुकाबले में। And that's it. Mogam Spartan Strikers are the champions of Valley Cup Panzipora 2022, and the jubilation in the crowd and the celebration going on, handshakes on at the center of the play field here at Panzipora. My colleague alongside me, Nazir, we shall take you back to the studios of Digger Sports, and we shall be back next time with a new coverage, with a new match, with a fresh zest and zeal and new enthusiasm that time around. But this time around we shall be back in a while with the presentation ceremony. Join us back for the presentation. Dollars will be given away, followed by the medallions, the silver jubilee, silver plus golden trophies will be given away. Join us in a while for that show also. Till then, take good care of yours. Thank you for joining us. That's it we have for you from this grand finale. तो ये जानकारी देते हुए मैं शेख नजीर साथी कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर के साथ वापस जेके स्पोर्ट्स टाइम के स्टूडियो लिए चलता हूं। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।